मेरे साथ क्या हाल भाई। ठीक है आपसे। हेलो हाय हाय, कैन यू हियर मी? यस, कैन यू हियर मी? यस, पर आई कैन हियर यू वेरी वेरी लो। कुछ हुआ है क्या? ऑल गुड? एनी टेंशन? नहीं। चलिए देन लेट्स स्टार्ट विथ योर एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, व्हाटएवर वी हैव डन सो फार। नो। एग्जाम कैसा था? अगेन एनी क्वेश्चंस? कोई एग्जाम में अनरिजॉल्व पॉइंट कुछ ना समझ में आया हो? यस। चलिए बता दीजिए। लेट प्लीज शेयर योर आप स्क्रीन एंड लेट्स सॉल्व दैट आप पहले फर्स्ट। आप पहले चेक करेंगे ना कि देन आई कैन नो इफ इट्स करेक्ट और रॉन्ग। दैट्स प्रीवियस ओके, चेक तो एग्जाम्स मैं करूंगा। प्रीवियस एग्जाम्स के वो डिस्कस कर सकते हैं। Any questions you have till now, whatever we have done so far, so अब पूछ सकते हो। डजंट मैटर कि एग्जाम से है, बुक से है, बैक करके सिमुलेशन, एमसीक्यू, कहाँ पर भी हो, एनी क्वेश्चंस आप एक बार पूछ लो। इफ नॉट तो हम लोग बाकी के टॉपिक्स पे आज फोकस करते हैं फिर, जो रैब रैक में पेंडिंग है। ओके, लेट मी ओपन द एग्जाम्स। The first one I got it wrong. A company changes the depreciation method from double declining balance to straight line, it will be going prospectively. So B should be the right answer. But it's a change in principle, so why is it not retrospectively? So ये हमने एक्सेप्शन किया था, राइट? कवर जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, that change in accounting principle retrospective, exception is a depreciation या पीपीएनडी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस, इफ यू हैव अ चेंज इन salvage value, you have a change in useful life, or you have a change in In that depreciation in the method. वो केस उस वक्त नहीं होता when we also have a change in estimate at the same time. हाँ, तो ये इट्स अ सेम थिंग, राइट? ये दिस इज द एक्सेप्शन, and if there is a change in method of depreciation, even though it's a change in accounting principle, it is inseparable from change in accounting estimate, and hence it will be treated prospectively only. आपके मटेरियल्स ओपन करो फॉर द बेसिक नहीं, कॉन्सेप्ट्स। मुझे वो पता है उसमें, लेकिन इसमें चेंज इन एस्टिमेट था, that's why. सो आपने क्यों रेट्रोस्पेक्टिव बोला? Because we only they mention principle and not no change in estimate. हाँ, बट दैट्स अ कॉन्सेप्ट व्हिच आई टोल्ड यू, सो नॉट नेसेसरी कि वो आपको पूरा इंग्लिश एग्जाम में देंगे। सो यू हैव टू क्लिक द कॉन्सेप्ट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट डाउट क्या है? 14, 11. व्हेन यू कन्वर्ट अ कैश बेस्ड नेट इनकम, वहां से आप अक्रूवल बेसिस पे जाते हो, and there is an increase in accounts payable ड्यूरिंग द ईयर। सो आपके अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपका एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। कैश बेसिस पे आपने वो एक्सपेंसेस को इंक्रीज नहीं किया रहेगा, एंड व्हेन एन इंक्रीज हो रहा है आपका अकाउंट्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर, इसकी इफेक्ट क्या रहेगी? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने कैश बेसिस नेट इनकम ली थी, लेट्स से $10, जो आपने एक्सपेंस पे किया है।
and now you had a zero accounts payable. Let's say you had accounts payable of 25. So आपका expenses आपके increase हो जाएंगे up to a 15. So it is going to decrease your net income. That will be the right answer. which is my answer, but it's wrong. I think that's wrong in this AI evaluation sheet, but decrease in net income will be the right answer. So concepts are all okay. A US company has a foreign currency denominated accounts receivable. Perfect. At the year end, the foreign currency has strengthened against the US dollar. ये तो आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा because I can't give you answer straight away. आप एक एग्जांपल बनाओ. Suppose you had a INR accounts receivable and let's say कि आपका INR वैल्यू है, okay, let's put 1 lakh and आपका इनिशियल एक्सचेंज रेट था लेट्स से 100. सो आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल था यूएस डॉलर में दैट वाज आई थिंक $1000. इट विल बी. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग, वापस आओ क्वेश्चन पे. एट द एंड ऑफ द ईयर the foreign currency has strengthened, matlab INR has become a better. So let's just assume INR is now 80 at your end. आपका अकाउंट्स रिसीवेबल कितना बनता है? So you had no your Oh, वेट हमें है ना शुरुआत ऐसे नहीं करनी होगी. वी हैव टू टेक अ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रिसीवेबल. सो लेट्स पुट एल कॉलम यूएस डॉलर. एल कॉलम का हेडर लगाओ यूएसडी. वहां पर आप सबसे पहले $1000 लिखो. देन यू हैव एक्सचेंज रेट इन INR 100. सो एन कॉलम में INR लिखो एंड इट विल बी अ मल्टीप्लीकेशन 1000 into 100. सो इनिशियली आपका अकाउंट्स रिसीवेबल था विच वाज 1 लाख. देन आपका यूएस डॉलर में तो AR सेम रहा $1000. But your exchange rate has now, let's say INR has become better, so it's 80 or 90. Let's put 90. So आपका जो रिसीवेबल है वो कम हो गया INR की करेंसी में. So this is effectively your loss because आपका रिसीवेबल था और आपका होम करेंसी स्ट्रांग हो गया. So recognize a foreign exchange loss in the income statement. Recognize nothing, adjust only the balance sheet. So A will be the right answer. You have to recognize a foreign exchange loss in the income statement upon the conversion at your end. which is my answer. That is also right. ठीक है, चलिए next पे आ जाइए. So all good, no problem with the concepts. What is the payment and accounts payable has effect on current ratio? Assume इसका भी आपको पहला mathematics बनाना पड़ेगा. So let's just say you have a current assets of 100 and current liabilities of 80. So your current ratio क्या बन रहा है आपका? 100 divided by 80. 1.25. हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पे वापस आओ. What is the a payment of accounts payable has happened? Let's assume आपने $10 के accounts payable को पे किया. Your entry is accounts payable debit to cash credit. तो आपकी current assets हो गई 90, current liability हो गई 70. कैश आपका कम हुआ $10 से, so it's 90. Accounts payable कम हुआ $10 से, it's 70. So now calculate the new ratio and then see whether current ratio is increasing to 1.29. The answer is the current ratio will increase. Okay. It goes. चलिए आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर दीजिए रेव रैक का. उसमें जो भी Yes, क्वेश्चन. simulations करो. Question. हाँ ठीक है, चलिए बताइए सिमुलेशन पे क्या क्वेश्चन है. Why is this an increase in retained earnings? आई डोंट नो, आई टू Sorry, रीड. no, मुझे नहीं no, पता ये sorry. क्वेश्चन क्या है. Sorry, it's a decrease in retained earnings, but I wrote increase in retained earnings. देखना पड़ेगा. I have to read the question. So M Corporation has been following the FIFO method since inception.
In 2025, the management decided to switch to a weighted average method. Opening retained earnings 850, ending inventory under FIFO it was 120. अगर weighted average होता तो 95 होता. So it will be a decrease in the retained earnings जो यहाँ तक लग रहा है by $25,000 subject to a 30% taxation. Additionally, in reviewing the prior years, the controller has discovered a depreciation expense for 2024 was overstated by 18,000. तो आपको depreciation का effect beginning retained earnings में देना पड़ेगा. Calculate number one cumulative after tax effect of change in inventory method on the retained earning. Now आप change कर रहे हो FIFO से weighted average तो आपका ending inventory होता 95,000 which would have been lower. तो आपका beginning retained earning decrease होता by 25 or 70% roughly 17,000. So yes, the answer will be decrease in the retained earnings by 17,500. Match हो रहा है वो? Why is it decrease? So आप बताओ क्वेश्चन में आप FIFO से weighted average जा रहे हो तो अगर आपने weighted average पहले से ही लिया होता तो आपका इन्वेंट्री कितना होता? If my inventory value is decreasing, then my cost of goods sold will decrease. किसने बोला आपको? What is the difference between cost of goods sold and inventory? I don't get the cost of goods sold and inventory the T account. इन्वेंट्री का मतलब है इट इज इन योर स्टॉक, इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स येट. कॉस्ट ऑफ सेल्स तब होता है जब कोई चीज इन्वेंट्री से बाहर निकल जाती है. तो सपोज लेट्स से यू आर अ ट्रेडर ऑफ आईफोन. आप एक आईफोन लेकर आए मार्केट से. वो आईफोन आपने लेट्स से 60,000 में खरीदा. तो 60,000 इज द वैल्यू ऑफ योर इन्वेंट्री. अब आपने मान लो ये आईफोन को बेचा 95,000 पे. तो 95,000 इज अ सेल्स एंड देन 60,000 इन्वेंट्री मूव्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. लेकिन वो अभी तक मूव नहीं किया है एंड हेंस इट्स अ इन्वेंट्री, इट्स योर एसेट राइट नाउ. सो आपका पी एंड एल में क्या जाता है? सो योर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ योर पी एंड एल? इट्स अ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जब इन्वेंट्री इज ऑलरेडी सोल्ड आउट टू द कस्टमर. लेकिन अगर इन्वेंट्री सोल्ड आउट ही नहीं हुआ है, लेट्स से फर्स्ट ईयर में आपने एक आईफोन लिया विच इज इन योर इन्वेंट्री, आपने कुछ सेल्स ही नहीं किया. सो व्हाट इज योर इनकम स्टेटमेंट? शोज सेल्स जीरो, कॉस्ट ऑफ सेल्स जीरो, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो. व्हाट इज योर बैलेंस शीट शोइंग? इन्वेंट्री 60,000. नाउ यू गो टू अ सेकंड ईयर, आपने आईफोन सेल किया 95,000 में. व्हाट इज योर इनकम स्टेटमेंट शोइंग? सेल्स 95,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कब जाता है? जब व्हेन यू सेल एक्चुअली द इन्वेंट्री. लेकिन यहाँ पर तो बात हम लोग सिर्फ इन्वेंट्री की कर रहे हैं. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये फ्यूचर में जाके बनेगा जब ये इन्वेंट्री एक्चुअल में सोल्ड आउट होगी. सो व्हाट वी आर सेइंग कि यू हैव अ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 1,20,000 अंडर फीफो. हाउएवर अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री वेटेड एवरेज में लेते तो वो 95,000 बनता. नाउ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? That is your opening stock plus purchase minus closing stock. It gives you cost of sales. अगर आप वो फॉर्मूला में फिगर्स रखोगे, so you're at a value of 1,20,000, the cost of sales is going to be a lot lower. At a value of 95,000 inventory, your cost of sales is going to be a lot higher. अगर ये चीज समझ में Why नहीं is it आती तो higher if it's starting? आप लिखो फॉर्मूला पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है. What is the formula for cost of sales? Beginning inventory लिखो बिगिनिंग इन्वेंट्री uh, plus purchases प्लस परचेसेस minus ending inventory. माइनस एंडिंग इन्वेंट्री. लेट्स जस्ट पुट हाइपोथेटिकल नंबर. आपका बिगिनिंग इन्वेंट्री है $100. आपने परचेस किया लेट्स से $1,000 ड्यूरिंग द पीरियड. एंड नाउ अंडर द फीफो आपका एंडिंग इन्वेंट्री है 200. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड?
900. नाउ लेट्स जस्ट से कि आपका बिगिनिंग इन्वेंटरी 100 है, परचेस 1000 है, बट यू डिसाइडेड टू यूज अ वेटेड एवरेज मेथड. ये क्या लिखा वापस 100? अच्छा, वापस कर रहे हो. नाउ लेट्स जस्ट से अंडर वेटेड एवरेज मेथड योर क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 175, नॉट 200. तो इस केस में अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बनेगा? Can I say 925. if you use a FIFO, your cost of goods sold is 900. If you use a weighted average, your cost of goods sold is 925. So if you use a weighted average method, आपका cost of goods sold अगर higher है तो आपका profit कम होता है. तो profit कम होगा तो retained earnings कम होगा. Exactly the scenario जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपका FIFO मेथड पे एंडिंग इन्वेंट्री 120 है, वेटेड एवरेज पे 95,000 है. तो टेक्निकली आपका रिटेन अर्निंग्स जो है वो 25,000 से कम होगा. उस पे 30% का आप टैक्स बेनिफिट लो, सो इफेक्टिवली 17,500 से आपका बिगिनिंग रिटेन अर्निंग्स कम होगा. On retained earnings as of 1x25. हम्म. बताइए क्या क्वेश्चन है, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग इट. Okay. क्लियर है? Hmm. चलिए ठीक है, बाकी के कोई क्वेश्चन हो तो बता लो. Here, event one on January 2027, a major customer declared bankruptcy. Outstanding balance at 12/31/2026 was 30,000. There were MCQs for this on ऑन the थर्टी exam as फर्स्ट well. ऑफ ऑन थर्टी Today's फर्स्ट ऑफ exam. डिसम्बर वॉज देयर अ कंडीशन कि कस्टमर बैंक करप्ट हो सकता है? If yes, then it's a Mm, adjusting event. However, if on 31st of December there was no indication कि customer bankrupt हो सकता है, but अगर एक customer bankrupt हुआ है after balance sheet date and if it's a material जो question में बोला है major customer है, so only disclosure is required now for this. That's my understanding as well. Uh, but तो आंसर में क्या दिया है? it's uh, it's recognized and it says that they provide evidence of a condition's customer financial difficulty. Although नहीं, ये तो there's बी के nothing लिए दिया mentioned. हुआ ना, नॉट ए के लिए. इट इज गिवन फॉर द बी सब की ब्रैकेट. बात ही हो रही है. बी का ये पार्ट है. वेट 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 वेट. सो बी में बोला है इवेंट वन एंड इवेंट टू फॉर ईच सब्सिक्वेंट इवेंट वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज. ठीक है. सो बी का पॉइंट अगर मैं नीचे पढ़ूं, इवेंट वन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द बैंक करप्सी एट ईयर एंड एंड नथिंग इज मेंशन. सो यहाँ पर तो इवेंट वन में सिर्फ डिस्क्लोजर ही बोला है. आप कहाँ ये पर मेरा दिखा रहे हो? आंसर है. ये मेरा आंसर है. सो दैट इज मार्किंग राइट, स्कीम. आपका आंसर परफेक्ट है. इट्स मार्किंग स्कीम says recognized it's event recognized. provides, इसने सब्जेक्ट डाल दिया ना, सो आई थिंक ही हैज एडेड अ कंडीशन दैट इट्स recognized provides evidence of a condition financial difficulty existed on 12/31. एक बार वापस क्वेश्चन में जाओ, कुछ भी दिया है क्या? फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी 12/31 को? Just outstanding कॉलेज balance. में आई थिंक इट्स ओनली आउटस्टैंडिंग बैलेंस. फाइनेंशियल डिफिकल्टी कहीं पर नहीं है. आई थिंक आई एम अलाइन मोर विथ योर आंसर देन कि बैंक करप्सी का कोई भी डिटेल्स नहीं था 12/31 पे, तो इट्स जस्ट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड. अगर आपको दिया होता कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑलरेडी है, देन इट वुड हैव बिकम अ इवेंट टाइप 1 इवेंट. Okay. Mm, mm. बताइए कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन. Uh, this one. So the main problem in this question for me, and I think it was repeated in another exam, is how the treasury shares should not be counted in the outstanding, are not counted in outstanding. So we don't हाँ give the राइट. dividends. We don't give the dividends for them. But in this calculation, they are giving the dividends for the outstanding treasury stocks as well.
आपको डेट्स देखनी पड़ेगी। अगर आई डोंट नो द क्वेश्चन, बट लेट्स से इफ यू आर गिवन अ कंडीशन की बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे आपके सारे 100% शेयर आउटस्टैंडिंग है, जून में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, एंड इफ योर ट्रेजरी स्टॉक मींस अ रीपर्चेस इवेंट इज हैपनिंग आफ्टर द डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो वो स्टॉक पे जाएगा। बट वी हैव टू सी द सीक्वेंस, एक बार क्वेश्चन It's मेरे को it's पढ़ने दो। it's at the end. So you have a opening stock, and then you have a issued share of 20,000. 15th of June you have repurchased the share under cost method, उसमें से आपने री इश्यू कर दिए 4,000 एंड 2,000, तो 6,000 के ऊपर स्टिल डिविडेंड जाएगा बिकॉज दे आर री इश्यूड अगेन, and then you have declared a cash dividend for all the shares which are outstanding at year end, and then you had a net income। ठीक है, अब डाउट क्या है कि 100% ट्रेजरी स्टॉक पे डिविडेंड दिया है या ओनली 6,000 पे दिया है? They are giving it in the whole. Where is it? नहीं, हर एक पे नहीं The दे रहे हैं ना, दे आर जस्ट रिड्यूसिंग 4,000 ट्रेजरी स्टॉक। आपने 10,000 शेयर्स रीपरचेस किए थे, the इसमें से आपने 6,000 तो री इश्यू कर दिए। the dividend payable they calculated is 62,000, which is 124,000 shares. I am और getting dividend payable 124 कैसे आ 58,000. रहा है? 124 का ब्रेकअप क्या है? 124's breakup is that they सो the 1 लाख 100 इनिशियली 116 plus the treasury combined is 124,000. कहाँ पे कंबाइंड है? आई एम नॉट स्टिल गेटिंग इट। आपका 1 लाख इनिशियल शेयर है प्लस 20,000 इज इश्यूड शेयर, सो दैट बिकम्स योर 120. 1,20,000। 120 में से आपने 10,000 वापस ले लिए, सो आउटस्टैंडिंग आर 110। 110 में से आपने 6,000 को री इश्यू किया, तो आउटस्टैंडिंग शेयर आर 1,16,000। आपका डिविडेंड जो भी इश्यू होगा वो 116 पे होगा। 124 का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं बन रहा है मैथमेटिकली। Yes. So 116,000 into 0.5 is 58,000 dividends payable, हम्म। which here it's being they're using the treasury stock shares नो, of आई थिंक अगेन 124,000. ये एआई एरर, 116 इज अ राइट कैलकुलेशन जो आपका आउटस्टैंडिंग शेयर है। There was another MCQ in the previous exam, same thing. Uh, So I think AI is not reading the treasury stock concepts correctly. here in the what's it called? The it's not here. It's on the this one. Under a treasury stock method for computing a diluted EPS, options are assumed to be exercised and proceeds are used to pay the dividend to existing shareholder, repurchase the share at a market price. Uh, Options are assumed to be exercised, but now under treasury stock options का concept अलग है। Repurchase the share at exercise price, and you have No, an it should increase be in it should be B. earning. Yeah, it should be B. Yeah. Repurchase the share at average mark। ठीक है, मुझे तो अभी क्वेश्चन ही मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, बट ठीक है, if you are I clear then we got. can move। Which change requires only prospective treatment and no footnote explaining the prior period? It's a change of your estimates। लीफ ऑफ ईफो नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहेगा, यूजफुल लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल असेट, वॉलंटरी चेंज इन अकाउंट। सी विल बी द राइट आंसर। But what about footnote? Why would there not be a footnote? Change in salvage value, it's a change in estimate, you are not changing the accounting method here। आप आईफोन लेकर आए, यू थॉट कि आपको 4 साल बाद इसका सैलवेज मिलेगा $2,000, नाउ यू थिंक यू विल गेट ओनली $800। सो इट्स अ चेंज इन जजमेंट ओनली। whenever there is a change in judgments, change in estimate, like change in warranty provision, bad debt provision, salvage value, it's a day-to-day operations, you are not supposed to disclose any change in estimates।
अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो डिस्क्लोजर करना पड़ता। Right. The entry for B. Oh, A major customer balance declared a bank bankruptcy। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है कि 1231 को उसका एग्जिस्टेंस था कि नहीं था। अगर यस यू अज्यूम 1231 को उसका एग्जिस्टेंस था तो आपको इसकी एंट्री लेनी पड़ेगी और एंट्री विल बी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल। या तो एक एंट्री ये भी हो सकती है कि डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजन अवेलेबल। इन्होंने क्या assumption लिया है कि was evidence available on 1231 because it's a silent in the question। they accrued liability lawsuit to retain earnings, ये तो लोन सेटलमेंट का कुछ है क्या? नहीं, adjusting entry for loss law, and settlement. ये तो ए आइटम का एंट्री है। आपने मुझे No, बैंक so करप्सी दिखाया। बी आइटम पे जाओ सोल्यूशन में। yes, no, so sorry, it's A. I'm talking about A. So 10 January, a lawsuit it was filed in 2022, मतलब कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। इट वॉज सेटल फॉर 2,50,000। आपके पास अक्रूड लायबिलिटी था ओनली 1,80,000 का। तो आपको आपका लायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज नाउ यू नो कि 31 दिसंबर को आपका जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो 250 है, नॉट 180। सो आपका एंट्री बनेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड और रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिटेड टू अक्रूड लायबिलिटी अकाउंट। Which is what I did. हाँ, तो उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है? मैंने डेबिट accrued liability किया and credit retained earnings किया. नो, ये उल्टा एंट्री लिया है। दे हैव रॉन्ग, दे शुड हैव डन डेबिट रिटेन टू क्रेडिट बिकॉज आपका लॉस हो रहा है ऑन द सेटलमेंट व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज योर लायबिलिटी। क्योंकि उन्होंने सेकंड पॉइंट ठीक लिखा है चार्ज टू इनकम, बट चार्ज होता है तो रिटेन अर्निंग्स आपका डेबिट होता है, नॉट क्रेडिट। Yes. So, but I still, because there's nothing in the slides and nothing in the book for translation, I'm still getting confused what to do with ट्रांसलेशन को historical छोड़ rate दो and भी, current rate. ट्रांसलेशन हमने नहीं किया है, ट्रांसलेशन छोड़ दो। दिस वी विल सी ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। Okay. ठीक है, आपका रेव रैक वाला एक बार अब वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, उसको भी गो थ्रू करते हैं। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? सो लेट्स मेक श्योर कि टिल टुडे वी आर डन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्टार्टिंग टिल एंड ऑफ द फार नाउ। तो कल हम शुरू करेंगे एआर, then we go to inventory, very complicated, then we go to property plant equipment, intangible assets। so all are complex topic। उसके बाद हम जाएंगे liability section, consolidation section and then governmental accounting पे। so whatever are doubts till today एक बार clear कर लेते हैं, then we have a pure technicalities left only। चलिए, इसमें आपने पूरा डॉक्यूमेंट देख लिया, कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चन है वो मुझे बता मैंने दीजिए। मैंने कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग टच नहीं किया है, नंबर 4, जो फोर्थ क्यों सेक्शन है। आपने एक्सक्लूड किया है? मैंने आपको बोला था आप एग्जाम्पल मैंने सिर्फ छोड़ फिफ्थ दो। मैंने फिफ्थ सेक्शन किया है। फोर्थ सेक्शन नहीं, अब मेनली ऊपर आइए। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग है। देखो, एक चीज आप समझो कि व्हेन यू गो इन एग्जाम और दिस आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स बुक हैज गिवन। आपको एग्जाम में हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन का ना आए, लेकिन लेट्स से दे गिव यू एग्जांपल फॉर अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री और दे आस्क यू एग्जाम फॉर फॉरेक्स इंडस्ट्री, तो कॉन्सेप्ट्स तो आपके सेम रहेंगे ना। सो आई वाज वेरी क्लियर कि इग्नोर द हेडर्स, एग्जांपल्स देखो। एक मेथड मैंने छोड़ने को बोला था बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन दैट। सो लेट्स रीड एग्जांपल नंबर 9। ऊपर का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स अ सेम कंडीशन। जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है वन टाइम या ओवर अ टाइम, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट्स आर अनचेंज्ड। रीड करो क्वेश्चन को एंड फिगर आउट वेदर रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड वन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ओवर अ टाइम है तो आपकी जो तीन कंडीशन है उनमें से कौन सी कंडीशन ये ट्रिगर हो रही है?
over a period of time. हाँ, बट वाई ओवर अ पीरियड कौन सी कंडीशन ट्रिगर हो रही है? Because they cannot give the asset to any other. वो दैट्स अ हाफ कंडीशन। फुल कंडीशन क्या है? An entity has a right to receive the payment till the date of termination. So what this particular example is saying कि you have entered into a contract for a residential complex, कस्टमर नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, सो ये नॉन रिफंडेबल है तो बात खत्म हो गई वहां पर। सेकंड, कस्टमर अग्रीज टू मेक द प्रोग्रेस पेमेंट, इसका मतलब जो जो काम हो रहा है कस्टमर उसका पैसा देता जा रहा है। एंड नंबर थ्री, अगर कस्टमर पेमेंट करने का फेल करता है, in that situation entity has right to receive all the consideration. So this is the important condition. The entity controls the asset, but in the event of termination you have right to receive a full money, plus there is no alternative use. So there are two conditions which are triggered simultaneously, which means revenue will be recognized over a period of time. अब ऊपर का हेडर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वी आर लुकिंग अ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई भी इंडस्ट्री होती, कंडीशन वुड रिमेन द सेम, रेवेन्यू विल गो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली। Full money can. What's the point for full money? सॉरी, व्हाट इज द? You said that they're getting the full money. सो इफ यू रीड द थर्ड पॉइंट, इफ कस्टमर फेल्स टू मेक द प्रोग्रेस पेमेंट, मतलब अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट किया, एंटिटी हैज राइट टू रिकवर all the consideration till the time work is completed for that particular unit. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंशियल यूनिट का डेवलपमेंट था 3 इयर्स का एंड पेमेंट टर्म्स है 33% ईच ईयर। अब आफ्टर द 18 मंथ्स कस्टमर ने डिफॉल्ट किया, तो कस्टमर ने 33% तो पे कर दिया है, बट जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का 17% ड्यू है वो कस्टमर ने पे नहीं किया है। but the contract allows you to recover the consideration to the extent work is completed। मतलब अगर बिल्डर एंड कस्टमर अगर कोर्ट में जाते हैं, so contract allows builder to recover additional 17% which is work done over the month 13 to month 18। इट में इसका मतलब होता है entity has right to receive all the consideration under a contract in the event of termination। सो अगर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ऑन वन पॉइंट ऑफ टाइम। So over the period of time, mm, there was not. So is there a condition that they can recover the whole money? लिखा है ना, थर्ड पॉइंट पढ़ो वापस। नहीं नहीं, normal over the period of time we have 3 points. यस So यस, ओपन करो कंडीशन आपकी, ओपन द बैकर कंडीशंस। customer controls the asset as is risk कैन यू created. शेयर शेयर Cus- द स्क्रीन? आई कैन नॉट सी, एक बार आप शेयर भी करोगे? मैंने वो साइड बुक खोली है, वो अलग से खोला हुआ। वेट, मुझे बैकर ओपन करने दो। सो रेवेन्यू की जो कंडीशंस है, लेट्स सी, चलिए पढ़िए तीन कंडीशंस। Customer controls the asset as it is created. Customer simultaneously receives and consumes the benefit. There हम्म, is no alternative use plus enforceable right to payment. हाँ तो इसका मतलब क्या है? That Asset they have. doesn't have alternative use, plus entity has a right, enforceable legal right to receive the payment for the performance completed to date। मतलब जिस दिन पे अगर टर्मिनेशन होता है उस डेट तक एंटिटी के पास राइट है पेमेंट को रिकवर करने का। Okay. ठीक है, और ये कंडीशन एंड है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। asset has no alternative use plus entity has right to receive the payment to the extent termination date। आपके एग्जाम्पल में वापस आओगे तो एग्जाम्पल क्या बोलता है?
Number one, the condition asset has no alternative use, which is point number 4, plus entity has right to recover the money, which is point number 3. So point 3 plus point 4 together becomes a revenue recognized over a period of time condition. Okay. ठीक है, चलिए स्क्रॉल डाउन। इसको छोड़ दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट को हम देखते हैं। इट्स सिंपल एग्जांपल एक बार देख लेंगे। गो थ्रू एग्जांपल 10। But in this example, we're saying that the unit is not created. So, here we are also talking about units. सॉरी मैन, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। क्या बोल रहे हो? In this, we are also building a unit, but हम्म। ऊपर then के why is एग्जांपल it? में इट वाज अ कस्टमर स्पेसिफिक यूनिट। सो कस्टमर वाज डायरेक्टिंग एवरीथिंग कि भाई मुझे यहाँ पर किचन चाहिए, यहाँ पर लिविंग रूम चाहिए, यहाँ पर बेडरूम 1 2 3 चाहिए, यहाँ पर मेरे वॉश एरिया चाहिए, एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग्स। So the use was directed by the customer and asset has no alternative use। इसका मतलब कि अगर कस्टमर का साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो ये जो प्रॉपर्टी है बिल्डर उसका कुछ नहीं कर सकता। दैट्स इन डिस्प्यूट, दैट्स डन एंड डस्टेड। द एग्जांपल नंबर 10, द यूनिट इज अ जनरल यूनिट। मतलब लेट्स से आई एम अ बिल्डर, यू आर अ कस्टमर, आप मेरे पास फ्लैट लेने आए। आई हैव 1,000 ऑफ द फ्लैट इन अ वन हाउसिंग स्कीम और मैंने आपको एक फ्लैट बेच दिया। आपने मुझे पैसा देना शुरू किया। नाउ यू हैव डिफॉल्टेड इन द पेमेंट। सो आई विल गिव यू अ नोटिस कि आप या तो आपका पैसा क्लियर करो, इफ यू आर नॉट क्लियरिंग तो ये मैं फ्लैट किसी और को अब बेच दूंगा। बिकॉज इट्स अ जनरल यूनिट, इट्स अ कॉमन यूनिट, या तो मैं आपको बेचूं या बाहर भी मार्केट में इट्स द सेम थिंग, आई कैन सेल टू एनीबडी एल्स। So that is the main difference between 9 and 10 number example. Ninth में asset had no alternative use. इन एग्जाम्पल नंबर 10 असेट हैज द अल्टरनेटिव यूज कि अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट किया तो ये पर्टिकुलर अपार्टमेंट जो है बिल्डर किसी और को जाके बेच देगा। सो बिल्डर इज नॉट कंट्रोलिंग द यूज ऑफ द एसेट। Okay. चलिए आ जाइए आगे। इसको लीव कर दो। स्क्रॉल डाउन। 11 छोड़ दो, 11 को हम देखते हैं थोड़ी देर में। चलिए I didn't understand this. इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स अ वन स्मॉल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट टू ऑब्टेन एंड कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है that if you incur any specific incremental cost to win the contract and if the contract duration is more than 12 months, so accounting standard allows you to capitalize those costs and amortize over the useful life of the contract. However, those expenses have to be incremental only. You cannot have the general expenses. For example, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया and because of that I have incurred a two cost. Let's say I have incurred a sales commission and I have incurred a tender filing cost. Now if I assess two expenses, sales commission मैं employee को कब दूंगा? Only and only if sales contract is successful, otherwise commission देने की बात ही नहीं बनती है। So sales commission is an incremental cost just because the contract is won right now. But टेंडर फाइलिंग कॉस्ट की बात करें, सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप व्हेन यू फाइल एनी टेंडर और आपने कुछ फीस पे कर दी। नाउ देयर आर 20 अदर पीपल इन द मार्केट, उन्होंने भी टेंडर फाइल किया है।
So tender filing cost is not an incremental cost because you won the contract. It's a general cost. अगर आप contract नहीं भी जीतते तो आपका tender filing cost जो है वो लगता ही लगता. You have to forget if you lose the contract. So tender filing cost is not the incremental cost. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल असेस करना है कि कौन से एक्सपेंस जो है क्वेश्चन में वो इंक्रीमेंटल इन नेचर है, प्योर इंक्रीमेंटल इन नेचर. एंड सेकेंड, इफ द रिकवरी पीरियड मतलब जो बेनिफिट मिलने वाला है अगर वो 12 मंथ से बियॉन्ड है, सो यू कैन कैपिटलाइज दोस एक्सपेंस. एग्जाम्पल देखते हैं. 12 नंबर क्या बोलता है? अ सॉफ्टवेयर What does डेवलपर. capitalization mean? कैपिटलाइजेशन मतलब आप खर्चा पीएनएल में चार्ज मत करो. आप पहले उसको एसेट बनाओ, जस्ट लाइक योर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट. आप उसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट ट्रीट करो. दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन. And then the way you charge the depreciation, amortization, you amortize that particular asset over a period over which the benefit is expected. This is only for incremental costs. Only for incremental cost to obtain the contract or incremental cost to fulfill the contract. तो पहले There are ऑप्टेन पे बात करते हैं, फुलफिल पे बाद में बात करते हैं. okay. सो ऑप्टेन, लेट्स सी द एग्जांपल जो आपको 12th नंबर में दिया गया है. सो सपोज यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू परफॉर्म द इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर 3 years इन एक्सचेंज ऑफ $240,000. तो आपका जो रिकवरी पीरियड हो सकता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, दैट इज 3 years, विच मीन्स इट्स मोर देन 12 months. अब आपने क्या किया एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं. नंबर वन, लीगल फीस टू ड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कैन आई से कि आप लीगल फीस लॉयर को पैसा तभी दोगे if you have won the contract and now you want a formalities to prepare the contract and sign the contract. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने ये बिड जीता ही ना होता तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखना ही नहीं पड़ता, आपको लॉयर की जरूरत ही नहीं पड़ती. So is legal fee a pure incremental cost because you have won the contract? Yes or no? Yes. So legal fees, yes, you may think to capitalize the expense. Second देखते हैं travel cost to deliver the proposal. Now can I say कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो भी आपने तो ट्रैवल करना ही करना था. So this is a cost which is incurred whether you win the contract or you don't win the contract. It doesn't matter. अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को चला जाता तो आप वापस घर आ जाते, तो ट्रैवल कॉस्ट तो लगना ही लगना था. Nobody is going to reimburse it for you. So is travel cost a specific incremental cost? No. No. So travel cost has to be expensed off. You cannot capitalize because it's not the incremental cost. Third, sales commission को employee को sales commission. Now can I say आप कमीशन तभी दोगे if you win the contract, आप otherwise तो हर सेल्स कमीशन तो आप एम्प्लॉइज को नहीं देते रहोगे. So आप कमीशन कब पे करते हो? Only and only if you win the contract. So is $12,000 a pure incremental cost or not? Yes. So can I say 10,000 plus 12,000? Your 22,000 is an incremental cost because of obtaining of a contract, and 20,000 is a general cost which has to be expensed off. So entity can capitalize 22,000 as an asset in the balance sheet and amortize over a 3 years, which is a recovery period of the contract, subject to materiality concepts. So we Clear will small just concept. so we will divide the whole value and we'll have the same value for each month, the cost we're Yes, just capitalizing. like how you charge a depreciation amortization, you amortize this entire asset over a 36 months period. I चलिए, the didn't. second concept similar to this line, it's a cost to fulfill a contract. इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं. लेट्स से नाउ यू हैव विन द कॉन्ट्रैक्ट और अब आपको चीजें फुलफिल करनी है, एंड बिकॉज ऑफ द फुलफिलमेंट क्राइटेरिया आपने कुछ इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस किए हैं. लेट्स से आपके पास पहले एक रिसर्च लेबोरेटरी नहीं थी. नाउ यू स्पेसिफिकली नीड टू डिलीवर दिस वर्क. और लेट्स से आपके पास पहले सिर्फ 2 एम्प्लॉइज थे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो आपको एक और एम्प्लॉय चाहिए. So the new employee is hired only and only because of this contract. So it's a cost to fulfill the contract.
तो कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद आपके क्या क्या स्पेसिफिक इंक्रीमेंटल एक्सपेंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. And cost to fulfill the contract again can be capitalized and amortized over a recovery period. So this can include your direct material, direct labor, your overheads, your fixed assets, your employee cost, any expense जो आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर करने के लिए लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट. एक बार 13 नंबर का एग्जांपल चेक कर लो. Any payroll expenses, do we include them in If it's revenue an recognition? increment, you will not. If it's not incremental, you can exclude them. So incremental is only if the employee is only working for that. Yes, only Uh, for that project and specifically hired. If it, अगर मान लो आपने एम्प्लॉय को हायर किया बट एम्प्लॉय इज गोइंग टू वर्क फॉर अदर स्टफ एज वेल, तो फिर वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू दिस प्रोजेक्ट नहीं हुआ. ही इज अ इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट प्लस अदर टास्क एज वेल. तो आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, then you cannot capitalize that particular employee cost. Pre-existing employee नहीं हो सकता if they प्री only work on एग्जिस्टिंग one. नहीं हो सकता, नो, बिकॉज ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ और काम कर रहा है या पास्ट में उसने किया हुआ है. So pre-existing employee नहीं हो सकता है. So this has to be a incremental cost only. Okay. This one. Re- ये भी छोड़ दीजिए. आपने डेरिवेटिव्स कभी पढ़ा है क्या? बिकॉज अनलेस यू नो द डेरिवेटिव, आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आएगा. So when we go to financial instrument, we will learn derivatives. Then we will come back to this example. बाकी मैंने कर लिया था. Refund liabilities वगैरह सब क्लियर है. लास्ट एग्जाम्पल. Yes. You are also clear with the consignments. Again, consignment कोई टॉपिक नहीं होता है. We have done gross versus net reporting. So we know कि आप सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे, जब अल्टीमेटली टिकट्स बिकेगी. सो गोइंग टू अवर सेम एग्जांपल, लेट्स से कि अगर एथियाड एयरवेज ने मेक माई ट्रिप को ऑफर दिया कि आप मेरी कुछ सीट्स बेच सकते हो, बट अनलेस मेक माई ट्रिप वो एंड कस्टमर्स को बेचेगा तब तक रेवेन्यू कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल सेल्स. इट्स जस्ट अलॉटमेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. इट्स जस्ट अ कंसाइनमेंट. एक्चुअल कंट्रोल विल ट्रांसफर व्हेन इट इज सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी. For अगेन bill 5 पॉइंट्स. हेडर छोड़ दो, बिल एंड होल्ड. सिंपल है कि इन दिस एग्जांपल, व्हेन excavators and spare parts are delivered to the customer on 1st of July. अब फॉर एग्जाम्पल यू आर माई कस्टमर, मेरे पास फैक्ट्री है और मैंने आपको 1st of July को हैंड ओवर दे दिया. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इसको कहाँ पर रखना है. अगर आपके पास स्पेस नहीं है एंड बिकॉज यू हैव रिक्वेस्टेड टू फॉर मी टू स्टोर योर गुड्स, आई कैन डू दैट. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टिल कस्टमर का है. कल को उठ के लेट से फायर लगती है, आग लगती है, then the loss is for the customer, because मैंने तो सेल्स कर दिया 1st July को. I am ready to give the handover possession of the physical goods. Just because customer don't have the space at his premises doesn't mean कि मेरा control transfer नहीं हुआ है. So my revenue recognition will be done on the 1st of July for sale of excavator and sale of my spare part. अभी मैं आपको 18 months या नेक्स्ट 12 months के लिए गुड्स रखने के लिए जगह देता हूँ. So I'm charging a rent charges to you to use the space. So rent income will be recorded over a period for which a rental services are given.
So जो आपका थर्ड पार्ट है which is the custodial service, it means the duration for which a rental services are given. Again header छोड़ दो, you just have to focus the concept when a control is transferred and how a revenue should be recognized for a particular item. For चलिए नो मोर warranties, क्वेश्चन, आ जाइए एग्जांपल 11 पे. for warranties, uh, when is it a performance obligation? तो वारंटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमेशा से होती है द डे वन. फॉर एग्जांपल आपने $100 के गुड्स बेचे हैं. नाउ हिस्टोरिकली इफ यू फील कि 1% ऑफ द पीपल ऑलवेज कम बैक एंड क्लेम द वारंटी, सो टुडे आपके पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सेल ऑफ गुड्स एंड देन अ वारंटी. एंड लेट्स से 1% इज अ हिस्टोरिकल रेट, तो आप क्या करोगे, अभी 99 का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. अगेन हेडर नहीं पढ़ना चाहिए, इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट, कंसिडरेशन पेएबल बैक टू द कस्टमर, जो हमने एग्जांपल किया था शर्ट का. सो इट्स अ सिमिलर थिंग, कस्टमर वापस आएगा $1 के लिए, आपको उसको नई प्रोडक्ट देनी पड़ेगी इफ दिस प्रोडक्ट हैज अ डिफेक्ट. तो आप अभी 99 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, $1 यू विल कीप एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एज अ वारंटी प्रोविजन. अगर कस्टमर वापस नहीं आता है, लेट्स से योर वारंटी पीरियड इज 3 ईयर, अगर 3 इयर्स तक कस्टमर वापस नहीं आता है, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट वाज गुड, सो यू कैन स्टिल रिकॉग्नाइज अ रिमेनिंग $1 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. बट मान लो आफ्टर 7 months कस्टमर कम्स बैक एंड ही रिप्लेस द गुड्स, तो एट द एंड ऑफ द 7 month व्हेन अ न्यू गुड्स आर टेकन ओवर बाय द कस्टमर, यू कैन रिकॉर्ड अ $1 ऑफ पेंडिंग रेवेन्यू. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा था क्लोथ मार्केट का, वेर यू गो बाय अ टी शर्ट और बाय अ कॉफी, यू हैव अ रिवॉर्ड पॉइंट, आपको फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन बन जाता है. So now you call it a warranty, now you call it a penalty, you call it a cashback, you call it a merchant rewards, you call it a loyalty bonus. हर एक चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा. Okay. चलिए कीप शेयरिंग द स्क्रीन, एग्जांपल 11 पे आ जाओ. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगेन बिफोर वी गो टू एग्जांपल 11, again applicable to all the revenue accounting, not only this example, which is called onerous contract. Onerous contract का मतलब होता है a contract which is a loss making contract. Wait, If a wait, wait, contract, where are you looking? sorry, कहाँ हैं आप? कहीं पे नहीं है, it's a concept, nowhere given in the backer, but ये example करने से पहले concept समझना पड़ेगा. So onerous contract का मतलब क्या होता है? Onerous contract means a contract which is a loss making contract. For example, आप कोई चीज ₹100 में बेच रहे हो, and if your cost to deliver the product is 120, so it's called a onerous contract or a loss making contract. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, everything will be cancelled out. And onerous contract requires a 100% provision immediately. तो अगर आज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 100 है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 120 है, विच मीन्स यू हैव अ $20 का एक्सपेक्टेड लॉस. So no accounting rules are applicable for revenue recognition. You have to recognize 100% loss, which is $20 immediately. ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है because that is getting triggered in this example number 11. रीड करते हैं क्वेश्चन को, मैथमेटिकली बहुत सिंपल है. अगेन इट्स जस्ट अ इनपुट मेथड क्वेश्चन, बट उन्होंने हेडर अलग दिया है, एंड सिंस ये अलग टेस्ट होता है, सो आई वांट टू गो थ्रू विथ मी. सो फैक्ट्स ऑफ द केसेस क्या है? आपने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसका एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है $4,000. नाउ दिस इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. अब आपके पास दो ऑप्शन होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के इनपुट मेथड्स पे. नंबर वन, यू गो ऑन अ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन मेथड, विच मीन्स आपने हर साल जितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया उतना आप रेवेन्यू लेते जाओ, विच इज कॉल्ड अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड और अ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन मेथड. दूसरा मेथड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप पहले 4 साल में कुछ भी रिकॉग्नाइज मत करो एज अ रेवेन्यू, बट जब आप 100% डिलीवरी करोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू रिकॉग्नाइज 100% रेवेन्यू. सो बेसिकली अगर आप ऑप्शन 1 में हो, इट मींस यू आर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ 4 years, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन.
अगर आप रेवेन्यू एट अ पॉइंट क्राइटेरिया में फील करते हो, इट मीन्स यू रिकॉग्नाइज 100% रेवेन्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4. सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्दर. ईयर 1 में क्या हो रहा है? योर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द वर्क इज $3,000. दैट मीन्स आप प्रॉफिट पे हो. 4,000 इज योर रेवेन्यू, 3,000 इज योर कॉस्ट. यू हैव अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, सो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नॉट ट्रिगर्ड. आपका कॉस्ट इनकर्ड कितना हुआ है टिल डेट 1,500. सो कैन आई से इफ यू यूज द इनपुट मेथड, आपका एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है 3,000 का, यू हैव इनकर्ड 1,500, सो 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ ईयर 1. यस, नो? 50%. आपका The कॉस्ट co- इनपुट है 1,500, आपने टोटल एस्टिमेट किया है 3,000. दैट मीन्स 50% ऑफ द इनपुट्स आर कंप्लीटेड ऑलरेडी टू डिलीवर द प्रोजेक्ट. the percentage completion is not calculated from the total value for 4 years. ईयर 1 में आपको पता है फ्यूचर में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ बिल्डर, you are at the end of the 2026, which is year 1. Do you know what is going to be the actual cost for year 2, year 3, year 4 today? No. So what you know what is my estimated total cost. So at year 1, my actual costs are 1,500 and my estimated total 4-year cost is 3,000. So I can only estimate about the future. So can I say my actual costs are 1,500 because I know the actual details and my estimated cost is 3,000. So 50% of the work is delivered. Yes. Yes, no, yes. अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है एस्टिमेटेड? योर सेल्स 4,000, योर कॉस्ट ऑफ सेल्स एस्टिमेटेड इज 3,000. So your estimated gross profit is 1,000. How much work is already delivered? 50%. So her $1,000 into 50%, $500 का gross profit you can recognize in the income statement as a percentage of completion method in year 1. ईयर 1 का कैलकुलेशन में कोई भी डाउट आपको? No. चलिए, नाउ यू मूव टू ईयर 2. पहले चेक करते हैं इज इट अ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. आपका सेल्स प्राइस है 4,000 का, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 3,200. यू हैव स्टिल हैव अ प्रॉफिट ऑफ $800. गुड टू गो. अब ईयर 2 तक क्या हुआ? आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है ईयर 1 प्लस ईयर 2 की. सो आपके पास टोटल ईयर 1 प्लस ईयर 2 की कॉस्ट है 2,400. आपने टोटल कॉस्ट एस्टिमेट की है 3,200, which means 75% of the work is done for year 1 plus year 2 together. Now can I say, now at the end of year 2 your estimated gross profit is 800. 75% work is done for year 1 plus year 2. So your gross profit which is due is 800 ka 75%, which is $600. However, in year 1 you have already recognized $500 ka gross profit. So what is the incremental gross profit you have to book in year 2? It is $100. How $100? $600 cumulative year 1 plus year 2 gross profit minus $500 gross profit already recognized in year 1. So only incremental $100 of gross profit to be recognized in year 2. Year 2 calculation में कोई भी doubt? हेलो हेलो हेलो. Okay. कंफ्यूज हो तो बता देना. दिस इज व्हाट यू आर हियर फॉर. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क. Okay. चलिए, नाउ चलते हैं ईयर 3 पे. नाउ यू गो टू अ ईयर 3. पहले चेक करते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं. आपका सेल्स प्राइस है 4,000. नाउ यू एक्सपेक्ट योर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज $4,200. इट मींस इट्स अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ऑल द प्रोविजंस आपको भूल जानी है. $200 का लॉस यू नीड टू प्रोवाइड इमीडिएटली. However, आपने ईयर 1 में 500 का ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया, ईयर 2 में 100 का ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया. सो यू हैव ऑलरेडी अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 600. बट ईयर 3 में आपको पता लगा कि आपको लॉस मिलेगा 200 का. तो ईयर 3 में आपको इंक्रीमेंटल $800 का
लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू अराइव एट ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 का ग्रॉस लॉस ऑफ $200. Other calculation now it doesn't matter because आप 100% लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में हो. So you have a $4,000 revenue, $4,200 expenses, a $200 of loss. आपको ईयर 1 ईयर 2 प्लस ईयर 3 का जो आपका क्यूमुलेटिव इनकम स्टेटमेंट है वहां पर आपको $200 का लॉस चाहिए. आपने ऑलरेडी 600 का प्रॉफिट बुक किया है. सो इन ऑर्डर टू अराइव एट अ लॉस ऑफ 200 आपको $800 का और लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर ईयर 3. क्लियर विथ ईयर 3 कंप्यूटेशन? यस, नो, हेलो? The total has to be a 200 loss. Yes, that is the ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3. सो एंड ऑफ द ईयर 3 आपको क्या चाहिए? आपको $200 का लॉस चाहिए. आपने ऑलरेडी 600 का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है अभी तक ईयर 1 प्लस ईयर 2 में. तो अगर आपको 600 के गेन से 200 के लॉस पे आना है तो आप कैसे आओगे? टू प्रोवाइड इंक्रीमेंटल लॉस ऑफ $800 इन द P&L. And then that loss would be recorded in the current year. इन द करंट ईयर, यस, ईयर 3. Okay. चलिए ईयर 4 पे आते हैं. नाउ दिस इज द सिचुएशन जब आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीट हो गया. यू सॉ योर टोटल कॉस्ट वाज 4,300, रेवेन्यू वाज 4,000. अगेन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. यू नीड अ लॉस ऑफ $300 नाउ फॉर ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4. आपने आपको 1 2 3 4 का टोटल लॉस चाहिए 300 का. आपने 1 + 2 + 3 में कितना लॉस रिकॉर्ड किया है? 200 का. So what is the incremental loss requires to be recorded for year 4? $100 loss is required in the year 4. So this is how a year to year based on the percentage completion the accounting works. Now अगर आप at a point revenue लेते हो which is a 100% on completion method, तो बेसिकली यू डोंट रिकॉग्नाइज एनीथिंग इन ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3. आप 100% रेवेन्यू एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे अपने ईयर 4 पे. अगेन ओनली द एक्सेप्शन इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. तो इन अवर एग्जांपल ईयर 1 में इट्स प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट सो वी डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग. ईयर 2 में इट्स अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, वी डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग. Year 3 में it becomes a onerous contract, so you have to record the loss immediately, irrespective of your all the revenue concept. तो ईयर 3 में आपको चाहिए था ग्रॉस लॉस $200 का, so you record a gross loss of $200. ईयर 4 तक आते आते यू नीड अ क्यूमुलेटिव ग्रॉस लॉस ऑफ $300. आपने $200 ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है ईयर 3 में, so incremental loss of $100 will be recorded in ईयर 4. हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हैड इट बीन अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो हम ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते. ईयर 4 में 100% रेवेन्यू, 100% कॉस्ट, 100% ग्रॉस प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज अ रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम विच इज कॉल्ड अ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड और अ 100% रेवेन्यू ऑन कंप्लीशन. The first table, it's revenue over a period of time, which is a contract completion method or a percentage of completion method. Okay. ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट मैथमेटिक्स आपको समझना है, अदरवाइज एग्जांपल में कोई दम नहीं है. एक बार देख लो, कोई भी डाउट हो टेबल कैलकुलेशन में तो पूछ लो. No. ठीक है, एंट्रीज नीचे दी है, यू हैव टू गो थ्रू योर ओन. मैं आपको कुछ नाम चेंज करवा देता हूँ बिकॉज ये आपको अकाउंट्स अलग अलग दिखेंगे, यू विल अगेन गेट कंफ्यूज्ड. सो जहां पर प्रोग्रेस बिलिंग्स लिखा है उसकी जगह पर जस्ट अज्यूम दे आर अनबिल्ड रेवेन्यू, जो अनबिगर या अक्रूड रेवेन्यू, बिकॉज दोस कॉन्सेप्ट्स वी हैव डन नाउ. अगेन नाम अलग अलग है बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. सो एंट्रीज गो थ्रू ऑन योर ओन. क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लेना. स्क्रॉल इट डाउन, कुछ भी पेंडिंग रहता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में
If What's no, construction in progress account? सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. जब आप एक एसेट बनाते हो तो आपका फ्लैट आज के आज रेडी नहीं होता है, सो इट्स अ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. सो फॉर एग्जांपल आपने आज एक प्लिंथ बनाया, सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, वर्क इन प्रोग्रेस. एंड ऑफ ईयर टू आपने विंडोज लगा दिए, फ्लोरिंग लगा दिया, वर्क इन प्रोग्रेस. एंड ऑफ ईयर थ्री आपने फिटिंग्स लगा दिए सारे, नाउ द फ्लैट इज रेडी. सो वंस द फ्लैट इज रेडी, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से एसेट निकलेगा and it will move to a property, plant and equipment. So this is a WIP account, work in progress, asset is not completed yet. Construction in progress is what kind of an account? Asset? आप बताओ क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? एसेट है तो क्या होगा, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट? Current? करंट एसेट का डेफिनेशन क्या है? Less than a year or operating cycle? ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 4 years. सो इट्स अ करंट और नॉन करंट? Hmm. Current for the current year, non-current for the rest 3 years. नहीं, वो लायबिलिटी में होता है. एसेट में, लायबिलिटी में वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप पे आउट करते हो. इसमें ऐसा थोड़ी होने वाला है कि मैंने प्लिंथ बना दिया, प्लिंथ मेरा करंट एसेट हो गया, बाकी का फ्लैट जो बनेगा बिल्डिंग में वो नॉन करंट होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना. कोई कस्टमर प्लिंथ खरीदने तो आ नहीं रहा है. एज अ कस्टमर, लेट से आप कोई वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हो और लेट से उसका प्लिंथ बना हुआ है, दैट इज अ पोडियम लेवल तक काम हो चुका है. आप पोडियम लेने थोड़ी जा रहे हो, आप तो फ्लैट बुक करने जा रहे हो. सो डस पोडियम हैज एनी वैल्यू इन द आईज ऑफ कस्टमर? नो, नॉट स्टैंड अलोन बेसिस पे. यस, व्हेन यू बाय अ परचेज अ फ्लैट यू गेट द एमिनिटीज. लेट्स से आपको स्विमिंग पूल मिलता है, यू गेट अ गार्डन, you get a gym, but you are not going to buy a flat because of the swimming pool or a gym. Your first concern is to get a flat. So flat is your performance obligation. So all this construction in progress will convert into the inventory when a property is ready to be sold to the customer at a large. And this inventory will be in long term in nature. Why? Because it is more than your operating cycle of 12 months period. So all the work in progress accounts are always your non current assets. अगर वो current asset होते तो फिर वो work in progress ही क्यों होते, फिर वो आते और बन जाते और ready to sell हो जाते. This is for later. दिस इज द सेम जो हमने नीचे पूरा मैथमेटिक्स किया उसका एक टेबल लिखा हुआ है. So contract price minus cost gives you a gross profit, then cost incurred till date divided by total estimated cost gives you a percentage of completion. Gross profit into percentage of completion gives you a cumulative gross profit. Minus gross profit recorded in the last year gives you incremental to be recorded in this year. तो जो हमने टेबल नीचे सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, ऊपर उसका इंग्लिश लिखा हुआ है सिर्फ. Cost of LT is का cost of LT एंट्रीज is आप एक बार सारे देख लो. आई विल रेकमेंड यहाँ से पहले मत देखो, पहले अपनी एंट्रीज बनाओ. व्हाट इज अनबिल्ड रेवेन्यू, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू, एंड देन जो नेट एंट्रीज है वो यहाँ से रिव्यू करो. उन्होंने नेट एंट्रीज दी है, अगर आप सीधा एंट्रीज देखोगे आपको समझ नहीं आएगा. सो प्रिपेयर योर ओन जर्नल एंट्रीज फर्स्ट, कंपेयर विद दिस. अगर आप नहीं रिजॉल्व कर पाते हो देन आई विल हेल्प यू. okay. ठीक है, कॉल पुट ऑप्शन नॉट नाउ, डेरिवेटिव्स आपको समझना पड़ेगा पहले, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द एग्जांपल.
ठीक है, all right. So this ends your revenue recognition. This ends your FAR 1, FAR 2, FAR 3 में already we have done cash and cash equivalent. So tomorrow we'll come back and now we are starting with AR2. Sorry, AR tomorrow हो जाएगा कल खत्म. It's a small topic. Inventory complicated topic. टू थ्री सेशन सॉरी 2-3 सेशंस जाएंगे. PPND complex topic एक हफ्ता पूरा जाएगा. And then we'll move to FAR 4, liability, FAR 5, consolidation, and FAR 6, then the governmental accountings. So we are on track, I think mostly another 1.5 months, and then we should be good to complete entire FAR syllabus. चलिए, all right, then we'll call it a day. So मिलते हैं कल with a new topic, debtors and accounts receivable. आज का मैं आपका evaluation देख लूंगा and then I'll send the details across shortly. 1.5 month. So when I'm expecting to take the exam? आपका चॉइस है. सी आई ट्राई टू मेक श्योर कि बाय मिड जुलाई 10th of July आई थिंक आवर सिलेबस विल बी डन. आई से कि आप फिर उसके बाद कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट दो. सो लेट्स से बाय एंड ऑफ जुलाई यू गिव द प्रैक्टिस रिवीजन. मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का आप एग्जाम बुक कर लो. फिर First week of August. आपको जल्दी करना है, इट्स योर चॉइस. इफ यू आर कॉन्फिडेंट आप दे सकते हो. No, I'm checking the results submission. So the last date for is July 23. They will get August 7. And if I give it before August 15, then the result will come in August 25. हाँ, ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस ओनली. आपको 10-15 दिन का वेटिंग मिलेगा आपके रिजल्ट्स में. Yes. So I आपका think इवैल्यूएशन एनटीएस बुक कर लो. एटलीस्ट एनटीएस बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन बुक द एग्जाम स्लॉट. NTS exam date नहीं होती. Like the one नहीं, that the thing I showed you that was हाँ, बट making me आपको pay for it. एनटीएस तो बुक करना पड़ेगा स्टिल, राइट. उसके बाद ही एनटीएस आने के बाद ही आप प्रोमेट्रिक सेंटर्स में स्लॉट ले पाओगे. सो यू Uh, स्टिल हैव टू फाइंड अ वे टू बुक योर एनटीएस. and is there a deadline for to book my एनटीएस exam after जो getting होने के NTS? 6 months. एनटीएस 6 महीने के लिए वैलिड होता है. Okay. The only thing like for the date point of view is the discipline. That's where I'm confused because uh, obviously I'll miss the July date. Then I have to give the discipline before October बस तो फिर 31st अगर to आप get it. कॉन्फिडेंट हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट फॉर द जुलाई देन देयर इज नो प्रॉब्लम. आप नहीं सीधा बुक करो कॉन्फिडेंट एग्जाम. जुलाई जुलाई के लिए नहीं है क्योंकि आई थिंक डिसिप्लिन के लिए यही recommend होता है कि फर्स्ट डू either audit and tax and then give a discipline. आई मीन मैं आई डोंट बिलीव इन एनी ऑर्डर. पास तो आपको सब कुछ करना ही है. तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, इफ यू आर डूइंग, यू आर ऑन अ ट्रैक, इफ यू फील यू कैन क्रैक द एग्जाम, तो फिर बुक करके उसको देके खत्म करो. देयर इज नो लॉजिक कि अगर डिसिप्लिन सब्जेक्ट पहले देंगे तो इट्स अ बेटर. ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड ऑफ द डे आपको हर एक चीज आपको पास करनी ही करनी है. पर आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि फार के बाद कौन सा देना चाहिए क्योंकि आई थिंक आई थिंक टैक्स फार के के बाद बार ले लो. फार के बाद बार ले लो बिकॉज बार इज 60% फार ओनली. सो आपने जो फार में किया है आपको मेजोरिटी ऑफ द सेम थिंग्स मिलेगी. मे बी स्लाइटली एडवांस लेवल पे जो टॉपिक फार में नहीं है, बट स्टिल अ मेजोरिटी ऑफ द अकाउंटिंग पोर्शन. इसके बाद आप रेगुलेशन ले लो. रेगुलेशन से इजी कुछ भी नहीं है. वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, 1-1.25 महीने में खत्म हो जाएगा. ऑडिट को लास्ट में रखो क्योंकि ऑडिट तंग करेगा. इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू पास, वो वाला सिनेरियो है. सो ऑडिट को लास्ट में रखो आप. isn't bar the most difficult one बार इज or मोस्ट इजी. बार में कुछ है ही नहीं. पार I कर लिया तो आपका बार ऑलमोस्ट 60% हो चुका है. because I think the lowest passing rate and everyone says it's the toughest. नहीं, द हार्डेस्ट इज ऑडिट. इवन फार के भी पासिंग रेट हाई है. मुझे नहीं लगता कि फार उतना डिफिकल्ट है. बट जेन्युइनली स्पीकिंग ऑडिट विल बी डिफिकल्ट. आपको डिफिकल्टीज आएगी एग्जाम्स क्रैक करने में. इट्स नॉट इजी. फार लोग बोलते हैं उनको टफ लगता है. आई डोंट कंसिडर फार एज अ डिफिकल्ट एट ऑल. बार
एंड रेगुलेशन आर द इजीएस्ट टू क्रैक। और जो मैंने बोला बार आप फार आपने कर लिया है तो बार आपका 60% हो चुका है। सो देर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सिलेबस देयर। सो यू विल वंस वी गो टू बार आपको पता लगेगा ये सब तो हम करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। लाइक रेशियो एनालिसिस अ सेम चैप्टर, कंसोलिडेशन द सेम चैप्टर, रेवेन्यू रिकग्निशन, लीज अकाउंटिंग सेम चैप्टर। आपका काफी सारा सिलेबस ओवरलैप करता है। So FAR के बाद go for a bar straight away. I think within 1-2 months you will be ready to give the exam. Regulation 2 more months. बहुत small content है. There is nothing much there. फिर audit में you can give 4-4.5 months. आपको उतने लगेंगे audit में. Is bar syllabus more than TCP or ISC? TCP ऐसे I have not done, मैं करवाता भी नहीं हूँ because I do not recommend, क्योंकि FAR TCP and IP they go more on a technical side, taxation, business, economics, जो मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है। सो जनरली आई हैव नॉट सीन, मैं वो टॉपिक्स लेता भी नहीं हूँ। बट बार आई जनरली प्रेफर बिकॉज इट्स अ फार एंड अकाउंट्स इज मोर इजी रादर एज अ सीपीए अकाउंटिंग इज इजी रादर देन वी गो टू द अदर डोमेन्स। Okay. Okay. ठीक है, चलिए सी यू टुमारो। आप देख लो एग्जाम का स्लॉट, आई एम ओके। अगर आप जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक, आई थिंक शुड बी द आइडियल डेट्स। Okay. ओके बाय।